हेलो स्टूडेंट्स मु कृष्णा सर मु आपन एक रिवीजन प्रोग्राम लेके आछि आ से रिवीजन प्रोग्राम रो फर्स्ट चैप्टर होछि डिटरमिनेंट्स एमती करी गोटे पर गोटे सब चैप्टर हम रिवाइज करबा राइट आ रिवीजन रे बेसिक कांसेप्ट्स करबा बेसिक कांसेप्ट सहित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेमती मु आपन हेडिंग देछि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस along with previous year questions PYQS मतलब previous year questions एथि के हम करबा सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन इफ क्वेश्चन देखो 1 प्लस एक्स 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 स्क्वायर ये रो रे सेकंड रो एक्स 1 प्लस एक्स एंड एक्स स्क्वायर एक्स 1 प्लस एक्स ये गोटे डिटरमिनेंट दिया है राइट साइड द वैल्यू इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस ई एक्स रेज टू 4 प्लस एफ एक्स रेज टू 5 बड़ा गोटे एक्सप्रेशन दिया है यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रो वैल्यू फाइंड करियो पड़ियो केमती करिया प्रथम नजर जब देखियो क्वेश्चन को एंती लाग्यो कि पूरा डिटरमिनेंट को हम लेफ्ट साइड रे एक्सपांड कर दवा आ जो वैल्यू आसो डिटरमिनेंट रो ताको राइट साइड सहित इक्वेट करिया x रो कोएफिशिएंट को b कहया x स्क्वायर रो कोएफिशिएंट को c कहया x क्यूब रो कोएफिशिएंट को d कहया x रेज टू 4 रो कोएफिशिएंट को e और x रेज टू 5 रो कोएफिशिएंट को f कहया आ जो कांस्टेंट टर्म रहयो सेटा को a कहया बहुत टाइम नहीं जो क्वेश्चन जबकि क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन 1 मार्क रो क्वेश्चन ठीक बाबू केमती करिया कहीं ना मते सिर्फ ए दरकार आई नीड द वैल्यू ऑफ ए ओनली ए रो वैल्यू मत दरकार मते बी सी डी ई एफ सहित किछि लेना देना ना तो कौन करी एक्स रो एमती को वैल्यू टा पुट करिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स टू बी सब्स्टिट्यूटेड सो दैट बी सी डी ई एंड एफ ये सब गोटे थर जीरो हो ऑल विल बी साइमल्टेनियसली इक्वल टू जीरो क्लियरली जाना पड़छि जदि मु एक्स को जीरो कर देबी जदि मु एक्स को जीरो कर देबी ये जीरो हो जिवो ये जीरो हो जिवो ये और ये all the terms will be equal to 0 so put 0 is equal to x is equal to 0 so the solution is put x is equal to 0 so when you put x equal to 0 ये वाला term कौन है जो 1 plus x will be 1 this is 0 this is 0 this is 0 this is 1 plus 0 which is 1 0 0 0 1 तो ये हो गया तुमरो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड देखो x को जतले 0 करे सब 0 हो जो b into 0 c into 0 d into 0 e into 0 f into 0 only you will be left with a राइट और डिटरमिनेंट जानछो को हमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम लेके एक्सपांड कर परिया either you can expand by using first row or by using second row or by using third row or you can expand by using first column second column and third column मु फर्स्ट रो रु एक्सपांड करछि जतले मु फर्स्ट रो रु एक्सपांड करबी व्हाट आर द साइन यार साइन प्लस यार साइन माइनस यार साइन प्लस राइट एक्सपांड करो 1 into this is 1 minus 0 1 minus 0 बाकी दुटा 0 अछि तो रिमेनिंग टू एलिमेंट्स आर 0 तो नो नीड टू एक्सपांड बाकी दुटा एलिमेंट 0 अछि 0 into समथिंग आसो 0 into समथिंग आसो जो कि पूरा 0 हो जो सो दिस इज इक्वल टू a तो 1 into 1 that is 1 so a is equal to 1 this is your answer राइट कभी एमती कर दो पूरा एक्सपांड कर दो बोले गला खेल सरला राइट सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन द सेकंड क्वेश्चन इज इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 सो देयर इज ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3 गोटे डिटरमिनेंट अछि जार ऑर्डर 3/3 माने तीनटा रो अछि तीनटा कॉलम अछि और तार ईच एलिमेंट इक्वल टू 8 सब एलिमेंट 8 सहित इक्वल जदि एमती डिटरमिनेंट को हम 2 रे मल्टीप्लाई करिया देन राइट द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटरमिनेंट सो लेट अस राइट द क्वेश्चन फर्स्ट व्हाट इज सेज लेट a be the determinant let a be the determinant each element equal to 8 each element equal to 8 is multiplied by 2 every element of the third order determinant of value 8 is multiplied by 2 अब याकू 2 रे जदि मल्टीप्लाई करिया जो नुआ डिटरमिनेंट बनियो तार वैल्यू केते दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट ये डिटरमिनेंट वैल्यू होते 0 व्हाई because if any two rows or any two columns of a determinant are identical then the value of the determinant becomes 0 so ये दीटा रो देखो दीटा रो आइडेंटिकल या दीटा कॉलम आइडेंटिकल या एमती बोला सब आइडेंटिकल all the rows and all the columns are identical ऐसे केसेस में in these cases answer will be 0
या को 2 रे मल्टीप्लाई करबा 2 रे मल्टीप्लाई करले नुवा मैट्रिक्स कोन बनिवो नुवा मैट्रिक्स हे जो 16 16 16 16 16 16 दिस इज आल्सो इक्वल टू 0 लेखा दरकार नहीं सब 16 हेला so this is also equal to 0 so the original determinant is 0 after multiplying 2 also the new determinant formed also have the value 0 so the answer of the question is 0 बुझे होची जोटा डाउट होची एक्स्ट्रा आपन जहा भी दरकार पड़ियो राइट सब जिंस कमेंट सेक्शन रे लिखि पठेबे look the third question 353 and 242 lambda 78 is a singular matrix. What a singular matrix is? A matrix is said to be singular if its corresponding determinant value is equal to 0. यार जो determinant value 0 है जो ये matrix टा है जो singular. So this is 353 242 lambda 78. This determinant value is equal to 0. This is given to you, right? If this value is equal to 0, now tell me when the value of a determinant becomes 0, when two rows or two columns are identical, right? जदि ये प्रॉपर्टी हमें जानिनु जदि ये प्रॉपर्टी हम जानिनु ये पूरा डिटरमिनेंट एक्सपांड करिवा फर्स्ट रो को नेबा एक्सपांड करिवा कोन गुडे वैल्यू आसो एलएचएस रे इक्वल टू 0 करिवा लैम्डा रो वैल्यू आसो इफ यू डू लाइक दैट देन दिस इज प्लस दिस इज माइनस दिस इज प्लस तो एक्सपांड करो एक्सपांड जदि करिवा दिस इज 3 into 8 into 4 is 32 7 into 2 is 14 so 32 minus 14 minus 5 times 8 into 2 is 16 minus 2 into lambda will be 2 lambda plus 3 into row column charge 7 into 2 will be 14 minus 4 into lambda will be 4 lambda and this value is equal to 0 since the matrix is singular. So 32 minus 14 will be 18 into 3 minus 16 into 5 will be 80 minus into minus plus 5 into 2 will be 10 lambda 3 into 14 will be 42 minus 3 into 4 will be 12 lambda this is equal to 0 18 3 is 54 minus 80 plus 42 10 lambda minus 12 lambda will be minus 2 lambda and this is equal to 0 54 42 96 96 minus 80 equal to minus 2 lambda support nahi so this is 16 equal to 2 lambda let's divide by 2 so that lambda will be equal to 8 मिलेगा lambda 8 ये अपना आंसर हमें एमती करवानी विल डू सम मोर मैजिक कौन हम ये क्वेश्चन रे मैजिक एमती हम सिंस वी नो कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0 हमहु जाना अछि कि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 जदि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आमे जानछे तबे एमती भाबिबा डिटरमिनेंट वैल्यू केबे 0 होछि जेतलो को दुईटा रो या कोई दुईटा कॉलम आइडेंटिकल होछि नाउ इफ यू कंसीडर कॉलम 1 एंड कॉलम 3 प्रथम दुईटा एलिमेंट आइडेंटिकल 3 3 ए दुईटा एलिमेंट आइडेंटिकल जदि थर्ड एलिमेंट भी आइडेंटिकल हे गला देन ये ऑटोमेटिक 0 हे गला क्योंकि ऑलरेडी 0 गिवन अछि देयरफॉर लैम्डा शुड बी इक्वल टू 8 नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन सॉल्व करे दरकार क्वेश्चन देखिए आपण जान दे पारे राइट तो 1 मार्क आराम रे मिल गला राइट तो डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी ऊपर टी फोकस करियो क्वेश्चन आराम रे बन जो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व x plus 1 omega omega square omega x plus omega square 1 omega square 1 and x plus omega. Now what this omega is a complex cube root of unity. This has to be given in the question. Omega is a complex cube root of unity. Omega is a complex cube root of unity. Now ठीक है basic बुझी जान. Now let's learn some basic. If omega is a cube root of unity, what the theory is? If omega is a cube root of unity, if omega is a cube root of unity, then omega cube will be equal to 1. Omega cube will be equal to 1 and 1 plus omega square is equal to 0. तो ये दुईटा कंसेप्ट ओमेगा जदि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हबो ओमेगा क्यूब रो वैल्यू हबो 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हबो 0 नाउ ए कांसेप्ट को हम यूज करियो चेष्टा करियो तीन रो 1 रो 2 और रो 3 को ऐड करियो नाउ लेट द सॉल्यूशन r1 कैन बी रिटन एज r1 plus r2 plus r3 so this will be
x plus 1 plus omega square. Here also x plus 1 plus omega square. This is also x plus 1 plus omega square. This is omega. Here is omega square. This is x plus omega square. Here is 1 and this is 1 and this is x plus omega. So this is equal to 0. Now since x plus omega square 0, ये value टा 0 है. This value is also equal to 0. This value is also equal to 0. So this will be x omega x plus omega square 1 omega square 1 and x plus omega, and this value is equal to 0. This value equal to 0. Now minus करते दीटा 0 बनाया पड़ो 0 0. तो column 1 will be column 1 minus column 2 and column 2 will be equal to column 2 minus column 3. So x minus x can 0, x minus x 0. Now this is x. Now this is omega minus x minus omega square. Minus x plus omega square minus 1 and 1. This is omega square minus 1. This is 1 minus x minus omega. This is x plus omega. Yeah, here up करके right side this is x and this is 1. Now this value is equal to 0. Now expand this. Expand कैसे करेगा? X into this is x into omega minus x minus omega square into 1 minus x minus omega minus omega square minus 1 into x plus omega square minus 1, and this is equal to 0. Now this is x into multiply कर omega रे सब को, omega into 1 will be omega minus omega into x minus omega square minus x minus minus plus x square plus omega x, then minus omega square plus omega square into x plus omega cube. This minus omega square into x, omega square will be omega raised to 4, omega square into 1 will be minus omega square minus x minus omega square and plus 1, and this is equal to 0. या को solve कर दो. This is x into this is omega minus omega into x plus omega into x will get cancelled. Now what will be left? Minus omega square minus x plus x square minus omega square plus omega square into x plus omega cube will be 1 minus omega square x minus omega raised to 4 plus omega square plus x plus omega square minus 1, and this will be equal to 0. Cancel कौन हो जाए देखो, minus omega square plus omega square will get cancelled, minus omega square and plus omega square will get cancelled, omega raised to 4. Now look, omega raised to 4 मतलब omega cube into omega cube is 1 into omega will be omega, so this is minus omega, this is minus omega and this is plus omega, get cancelled, and then omega square x and minus omega square x plus 1 and minus 1 will get cancelled, x is equal to 0. X cube is 0, therefore x is equal to 0. So this is your final answer. Correct? Now, one more question. Say question is 4 mark question. Now it is a 6 mark question. Now look, so that b plus c whole square a square bc, c plus a whole square b square ca, a plus b whole square c square ab equal to a square plus b square plus c square. In these type of questions, आप एमतिया क्वेश्चन रे सब मन रख राइट साइड को सब नजर रखियो. Always keep an eye on the right hand side. What the right hand side is? A square plus b square plus c square. कौन कले हमको a square plus b square plus c square मिलियो फर्स्ट रे. कौन करिया? What will do? या को एक्सपांड करिया. कौन मिलियो? b square plus c square plus 2bc plus a square कर दो. minus 2bc करियो पड़े. bc को 2 रे मल्टीप्लाई करियो माइनस करियो. So the first LHS.
LHS रे कौन करिवा this is given b plus c the whole square a square bc c plus a the whole square b square ca a plus b the whole square c square ab. this ट्रांसफॉर्मेशन कौन यूज करिवा ट्रांसफॉर्मेशन हम एमती यूज करिवा कि c1 is equal to c1 plus c2 a square ऐड हेगला 2bc माइनस करियो मतलब -2 into c3 what you will do c1 is equal to c1 plus c2 minus 2 into c3 तो एटी कौन हेगला देखो ये हेगला b स्क्वायर plus c स्क्वायर plus 2bc a स्क्वायर ऐड कले आ 2 रे मल्टीप्लाई करके c3 के माइनस कले -2bc and this is a square and this is bc. This is also c square plus a square plus 2ca plus b square minus ca. So this is 2ca and this is b square and this is ca. This is a square plus b square plus 2ab plus c square minus 2ab. This is c square and this is ab. Yes. Now what will be left? 2bc and minus 2bc gets cancelled. 2ca minus 2ca plus 2ab minus 2ab. A square, b square, c square common. First column row a square plus b square plus c square. ये आपको common निकला. So this will be 1, 1, 1. Then this is a square, b square, c square. This is bc, ca and ab. bc, ca and ab. Right now the element 0 करेगा r1 minus r2 and r2 minus r3. r1 is r1 minus r2 and r2 is r2 minus r3. So this is a square plus b square plus c square into 1 minus 1 will be 0, 1 minus 1 will be 0. This is 1. Here is a square minus b square. This is b square minus c square. This is c square. This is bc minus ca. This is ca minus ab and ab. So therefore a square plus b square plus c square into here is 0, 0, 1. First column है second column होची a square minus b square. So can be written as a plus b into a minus b. एथरे a को कॉमन नेले c minus b मिलियो हमको लोड़ा b minus c. हमको कौन दरकार b minus c. तो minus c कॉमन निकले you will get a minus b. Then minus a common निजवा you will get b minus c and this is ab. This is b plus c into b minus c and this is c square. Right now first row a minus b common as well, second row b minus c. So this is a square plus b square plus c square into from the first row take a minus b, from the second row take b minus c. This is 0, 0, 1. A minus b gala. This will be a plus b. This will be b plus c. This is c square. This is minus c minus a and ab. Now expand. So this is equal to a square plus b square plus c square into a minus b into b minus c into 1 into ये हट जो सूत्र एक्सपांड करছে से रो और कॉलम हट गला a plus b into minus a minus of minus c into b plus c. So this is equal to a square plus b square plus c square into a minus b into b minus c into minus a square minus ab plus bc and plus c square. So this is equal to a square plus b square plus c square into a minus b into b minus c into ये दो टर्म को साथ रखो c square minus a square plus
From these two, minus BC plus BC gets cancelled. Minus AB, B common नहीं. So this is equal to C square minus A square. C square minus A square. This is AB, right? Common never C minus A. So this is A square plus B square plus C square into A minus B into B minus C into C minus A. तो एठी रहिबो आपनकर C plus A C plus A plus B. This is your RHS. Steps मन रखे कौन कले फर्स्ट C1 plus C2 minus 2 times C3 कले 1 1 1 आसीगला 1 1 1 आसीला माने दुईटा को जीरो करियो पड़ियो दुईटा एलिमेंट को जीरो कले 1 रो एक्सपांड कर दे कॉमन नहीं कि चल गया राइट. तो एमती हम गोटे गोटे वीडियो बनेबा. द वीडियोस विल इंक्लूड ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस. जति कि चैप्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब कवर करिया प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन करिया आ एमती क्वेश्चन करिया जो एग्जाम रे पूरा हेल्प करियो आपन मन राइट. यार जो नोट्स गुडा अछि से नोट्स गुडा हम टेलीग्राम ग्रुप रे यार नोट्स हम पीडीएफ बनै रखछु राइट. आ से गुडा डाउनलोड करि पारे आ सेहि पे आपन को टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करियो पड़ियो. तो जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप टू गेट ऑल दिस पीडीएफ नोट्स. आ सेहि पे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ बेल आइकन को प्रेस करंतु सब नोटिफिकेशन आपन मिल पारे. थैंक यू.